What is up, riders? How you all doing? Hope you all are fit and fab. This is Saurabh and I welcome you to the Motorbike Vlogs. Today is December 31st. It's a Sunday morning, the last day of the year, and what better way to bid adieu to 2023 than go on a bike ride. अभी सुबह के 11 बजे हैं. I started out late as I was in no mood to wake up and head out early in the morning. मैं आज लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव जाऊंगा. इट्स सिचुएटेड इन द अरावली हिल्स और कहते हैं वो लेपर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है. थैंक यू ब्रो. आई बीन गेटिंग सो मच अटेंशन ना राइडिंग दिस बाइक. एक तो ये बस अभी लॉन्च हुई है और सड़क पे देखने को नहीं मिलती. एंड ऑल्सो दिस बाइक इज रियली बिग इन साइज, लुक्स रियली गुड. It's really got an amazing road presence and makes heads turn. तो मैं आपको लेपर्ड ट्रेल के बारे में बता रहा था. It's a really famous place amongst automobile enthusiasts. बहुत बाइकर्स और कार ओनर्स वहाँ जाते हैं. As it offers scenic views, hiking and trekking paths, off-road trails, etc. और अब तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स और ईटरीज भी वहाँ खुल गई हैं, तो और ज़्यादा फुटफॉल होने लगे हैं. This morning I will cover about 50 kilometers to and fro approximately. और ये dash is so good, really helpful. मैंने अपना फ़ोन अभी कनेक्ट कर दिया है और मैप्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट हैं. So while riding I will give you my non-technical first impressions. आप कह सकते हो कि ये एक तरह से कॉमन मैन्स मोटरसाइकिल रिव्यू है. आई एम श्योर आप सबको इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एक्सेट्रा पता हैं और वो सब आप गूगल भी कर सकते हो. बट व्हेन आई अपग्रेडेड टू दिस बाइक माय फ्रेंड्स एंड acquaintances asked me how is this any different from the previous motorcycle I owned, which was the Scram 411. Well, I would say this is a totally different machine, a brand new engine and a brand new motorcycle. One shouldn't really compare it with any existing bike. इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही एकदम अलग है. ये हम राजीव चौक पहुंच गए और यहाँ से लेफ्ट लूँगा सोना रोड के लिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ राइडिंग द न्यू हिमालयन, शैल वी. तो अभी तक इस मोटरसाइकिल पे मैंने कुछ 180 किलोमीटर्स किए हैं और इसको राइड करने में बहुत ज़्यादा फन है. Trust me, in this price bracket, I don't think there's any other bike which comes even close to this new Himalayan. बाइक का इंजन बहुत ज़्यादा refined है. It is so smooth and vibration free even at higher speeds. Well, I'm very careful during the running in period and haven't really revved it much. Even at speeds over 80 kilometers and so it's really a smooth ride. I stand over 6 feet tall and the bike is really awesome to ride. The riding triangle and the geometry is awesome. The handlebar is wider than the previous bike I owned and my hands sit comfortably on the grip. The seating posture is very comfortable. It's got an adjustable seat. Right now it's set to 825 mm. You could increase it to 845 mm. It's really got that big bike feel and you sit high above the ground. My legs are also very comfortably rested on the foot pegs. ये जो angle है ना बहुत सही है, especially for good long tours. The frame is a steel twin-spar tubular frame. It gets a brand new suspension. The front is an upside down fork and gets a 200 mm travel. Both front and the rear suspension is Showa. Now because of the 21-inch front wheel, ये बाइक बम्प्स वगैरह से बहुत ज़्यादा आराम से निकल जाती है. पॉटहोल्स वगैरह कुछ खास फील नहीं होते. अंडुलेशंस भी कुछ खास फील नहीं होती. इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सही है. फ्रंट लाइट इज LED और लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स भी LED हैं, विच इज़ क्वाइट कूल. स्विचेस एक्सेट्रा की क्वालिटी थोड़ी और प्रीमियम हो सकती थी इन माई ओपिनियन. And now the star of the show, this color TFT is absolutely amazing. It has got all the information you would ever need. You get an analog and a digital option, a day and night theme. I will make another video on the TFT console very soon. और इस इंजन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. It's a game changer, boss. It is so smooth, so refined and very responsive. And this gearbox is buttery smooth. Well done, Royal Enfield. I'm really impressed.
ऐसी गियर शिफ्ट मैंने किसी रॉयल एनफील्ड बाइक पे एक्सपीरियंस नहीं की। अभी मैं इसका डिस्प्ले मोड एनालॉग पर कर देता हूँ। इवन एट 3000 आरपीएम इसका पुल इतना सही है, एकदम भागती है बाइक, वेरी जिपी इवन इन द फिफ्थ गियर। अच्छा, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, द टायर्स आर ट्यूबलेस बट अंदर ट्यूब लगी है और ब्लॉक बटन पैटर्न में ये टायर्स हैं। They seem to be fine for city and off-road usage. They are exporting bikes with tubeless tires, but India में अभी कुछ पेटेंट का इशू है, इसलिए उन्होंने अभी यहाँ पर लॉन्च नहीं किए क्रॉस स्पोक रिम्स। They did say they will introduce those very soon. एवरेज की बात करें तो अभी डैश ने मुझे 27 इन सिटी से लेकर 30 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन हाईवे तक दिखाई है। आई विल चेक द एवरेज विद माई मेथड सून एंड लेट यू गाइस नो। Yep, this is the turn. You would see a lot of bikers here, especially over the weekends. A really cool place to visit once in a while. This is in the outskirts of Gurgaon और यहाँ की terrain बहुत ज़्यादा different है. Just look at this view. Isn't this a refreshing change from the boring mundane city? You have the foothills, you have ponds and even sand, just like the desert. ऐसा लगता है कि राजस्थान आ गए हो। Look at this, so green. These are the mustard fields, boys and girls. And I love all the adoration I get when I'm riding this bike. Feels so good, man. This bike is a stunner. Here are some bikers clicking pictures. This is what I said earlier. This place really attracts a lot of automobile enthusiasts. और देखो कितनी बाइक्स और कार्स पार्क्ड हैं, जैसे मेला लगाओ। कितने सारे लोग आते हैं यहाँ वीकेंड्स पे, बहुत सही जगह है ये। Look at these guys having fun in the sandal. Oops, बाइक निकालने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। Alright guys, I'm going to stop at one of the restaurants here. I heard there's a really famous dhaba kind of a place. Let's check that out.
Alright guys, I'm here at the Rathi Cafe in Leopard Trail और ये तो पिकनिक स्पॉट बन चुका है. I mean इतनी ज़्यादा फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं and I'm gonna grab a quick chai, maybe something to eat, and then we'll carry on from here. This is Rathi Cafe. The bike is parked here. See you, man. Thanks. Alright guys, I've had my chai and grabbed a bite. Also made some new friends too. I'm gonna head back home now. I wanted to ride today and make a video on my initial impressions of the motorcycle. Again, it's a common man's review who has had some experience in riding bikes and going on long rides. If you want the technical stuff, there are dozens of videos out there. You guys may check them out. I'm very happy and impressed with this motorcycle. You really have to ride it to believe it, okay? Book a test ride at some point. If you all have any questions about the new Himalayan, feel free to connect with me, comment or send me a DM on my Instagram. I will try getting back ASAP. Well, it's the last day of the year and it's been an amazing one. I traveled extensively on my Scram and with my band as well. I started vlogging, met new people. I hope the coming year is going to be really exciting too. I wish you all the best. Have a happy 2024. Take care of yourselves, ride safe and wear safety gear. I'm gonna see you all very soon. You know what to do. If you guys like the content, please support me by hitting the thumbs up and subscribe to the channel. Alrighty then.